Dear friends, good morning to all of you. आज एक बार फिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्पेशली अबाउट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 6 के रूप में ये वीडियो आपके सामने लेकर मैं आज उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो एनएमआर के अंदर शील्डिंग एंड डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, किसको हम शील्डिंग या डीशील्डिंग बोलते हैं, ये सारी बातें आज मैं बताने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो सुनिए दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है उसके बहुत अच्छे जो पॉइंट्स है मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, द सब्जेक्ट ऑफ टुडेज वीडियो is NMR spectroscopy, especially about shielding and deshielding of protons. So the first point of this video is the concept of chemical shift is closely linked with the shielding or deshielding of proton in a molecule. यानी कि ये जो केमिकल शिफ्ट है डेल्टा, इट इज वेरी क्लोजली लिंक्ड, वो इसके साथ जुड़ी है, जिसको हम शील्डिंग और डीशील्डिंग बोलते हैं। शील्डिंग और डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स इन अ मॉलिक्यूल जो होता है उसके साथ सीधी रिलेटेड, दैट इज केमिकल शिफ्ट। देन द अदर पॉइंट इज दैट a bare proton flips its spin from lower energy level to higher energy level. For example, its spin changes its orientation from upper direction to down या lower direction. Then the third point is that however all protons do not change or flip their spin at the same applied magnetic field because their energy depends upon the chemical environment of protons. So some of the protons cannot or do not change their spin, or they are not flip their spin. Then next point is that the magnetic field sensed by a proton in a molecule is not the same as the applied magnetic field, since the electrons in the bond close to the proton and the neighboring electrons in other bonds induced their magnetic fields. Next point is that this induced field may oppose or reinforce the applied magnetic field. There are two possibilities. Either the induced field may oppose or it reinforces the applied magnetic field. Then the next point is that the field experienced by the proton is thus the resultant of the applied and induced field. As shown in figure A, I would like to show you a very good figure, very simple figure to explain this shielding or deshielding or induced field and applied field. So the field experienced by the proton is thus the resultant of the applied and induced fields, as shown in figure A. You can see this figure. This is the experience by the proton is thus this is the resultant of the applied and induced field. And what is about B? As shown in figure A, when the two fields reinforce, as in figure B,
a smaller field must be applied, smaller field must be applied to flip the proton. तो यहाँ पर प्रोटॉन की जो स्पिन है उसको फ्लिप करने के लिए स्मॉलर फील्ड मस्ट बी applied. And in case of C, what does figure C indicate? That is, we can say with this point, such a proton is said to be deshielded. So in figure B, such a proton is said to be deshielded and absorbs more downfield. So these situations can experience downfield. We can say at lower magnetic field strength. So this create the lower magnetic field strength. And about figure C, we can say on the other hand, when the field oppose, when induced field oppose the applied field, as in figure C, a stronger field must be applied. You can see stronger field must be applied. The proton is now called shielded and absorbs more upfield. We can say at higher magnetic field strength. So this is for higher magnetic field strength. This is for lower magnetic field strength, and this is the resultant of both induced and applied magnetic field. So friends, आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं. आशा करता हूँ कि शील्डिंग और डिशील्डिंग के बारे में या फिर अप फील्ड और डाउन फील्ड के बारे में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डेल्टा कहाँ पर मिलेगा और क्यों वहाँ पर मिलेगा, ये सारी बातें आपको मैंने बताने का प्रयास किया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तब तक के लिए धन्यवाद. नमस्कार एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो.